हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रेब्स साइकिल का पार्ट 4 जो है वो बताऊंगा। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट आर द मेन स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कंडेंसेशन में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए आपस में रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस। साइट्रेट सिंथेटेस और ये जो एंड प्रोडक्ट है वो निकलेगा साइट्रेट। तो पहला स्टेप है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए। एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेटेस, एंड प्रोडक्ट साइट्रेट और citric acid is formed. So that is why we call it citric acid cycle. Number 2, step number 2 is dehydration. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन में साइट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये लूज करता है वाटर। So citrate here, arrow, reversible arrow, enzyme है aconitase, cofactor is Fe2 plus, and what is here formed? Cis aconitate, cis aconitate, aconitate, cis aconitate plus H2O. H2O means water. So these are the products here. So ये हो गए दो स्टेप्स। करें रिपीट? तो ये थी क्रेब्स साइकिल के दो स्टेप्स। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या है क्रेब्स साइकिल का? वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है? हाइड्रेशन में हम सिस एकोनिटेट को नीचे लाएंगे, प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल है इसके साथ रिएक्ट करेगा। एंजाइम सेम है। एंजाइम कौन है? एकोनिटेस। ये हो गया इसका कोफैक्टर Fe2 प्लस, और यहां क्या निकलेगा? आइसोसाइट्रेट। ये निकलेगा यहां स्टेप नंबर 3 में आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड। सो ये हो गए 3 स्टेप। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप बताएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है क्रेब्स साइकिल का? फोर्थ स्टेप है
And what will be the product here which is formed? That is oxalosuccinate. Oxalosuccinate. So oxalosuccinate is the product here formed in step number 4. Now let us come to step number 5. Step number 5. Step number 5 is decarboxylation. डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. So it is this oxalosuccinate which will lose one carbon atom. So here I am writing oxalosuccinate. This is an irreversible reaction, step number 5. So enzyme is oxalosuccinate decarboxylase. Oxalosuccinate decarboxylase. And what will be formed here? Alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate plus CO2. Carbon dioxide is released. So वो हम ऐसे दिखाते हैं arrow. Carbon dioxide is released or evolved in this step. Now let us come to the 6th step. Again, irreversible step, decarboxylation and dehydrogenation we call it. Decarboxylation and dehydrogenation. अब इसमें क्या होता है स्टेप नंबर 6 में, वो मैं आपको दिखाऊंगा. So here alpha ketoglutarate is one of the reactant, right? Plus NAD, nicotine amide adenine dinucleotide, plus CoA, coenzyme A, we call it CoA, and here this is the reaction. Alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme complex, we call it. Dehydrogenase enzyme complex. So what is the product which is formed in this step? Succinyl coenzyme A, we call it. Succinyl coenzyme A plus NADH plus CO2, that is carbon dioxide, right? So ये हो गए Krebs cycle के 6 steps. Now let us come to 7th step. अब मैं आपको स्टेप नंबर 7 के बारे में बताऊंगा. स्टेप नंबर 7 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इसमें हम क्या करते हैं? सक्सिनाइल कोएंजाइम A is one of the reactants plus ADP, arrow, reversible arrow, enzyme, succinyl thiokinase is an enzyme. And what will be a product formed here? Succinate. इसको हम succinic acid भी कहते हैं. It's one of the organic acids. So all organic acids are formed here in this Krebs cycle. Succinate plus ATP is formed. Adenosine triphosphate, energy currency of the cell we call it. Now let us move to next step. Step number 8. Step number 8 is dehydrogenation. We call it dehydrogenation. Removal of hydrogen. All the reactions are enzyme mediated, right? So
So in this step, I will write here succinate. ये है succinate, या आप बोलेंगे इसको succinic acid plus FAD. FAD is again a coenzyme, flavin adenine dinucleotide we call it. Here we have to remember this enzyme, succinate dehydrogenase. This is an enzyme, and what will be the product here? Fumarate. We call it fumaric acid also. It is also an organic acid. Plus FADH2. So I will tell you one thing about this enzyme. This enzyme, which is called as succinate dehydrogenase, is located in the inner membrane of mitochondria. Please remember this point. Now let us move to next step, step number 9. Step number 9 is hydration. Hydration means addition of water. So here I will write fumarase. Fumarase plus H2O, water molecule. Arrow. Enzyme is fumarase. What will be the product formed here? Malate. Malate or malic acid. Malic acid is also one of the organic acids. Now, let me tell you about the last step of the Krebs cycle. That is 10 step. So Krebs cycle is a 10-step reaction. This is the last step of the Krebs cycle. We call it dehydrogenation. So in dehydrogenation, what happens? Malate plus NAD. NAD is a coenzyme, you know it very well. Nicotinamide adenine dinucleotide. Reversible arrow. Enzyme is malate dehydrogenase. This is an enzyme, malate dehydrogenase. And what will be the product formed here? Oxaloacetic acid plus NADH. NADH. So these were the 10 steps of Krebs cycle, which are all enzyme mediated, and different organic acids are formed in this Krebs cycle, which operates inside the mitochondrial matrix. Now, what are the end products of Krebs cycle? So lastly, I say oxidation of 1-acetyl coenzyme A molecule yields 1 ATP, 3 NADH2 molecules and 2 FA and 1 FADH2 molecule. So these are the end products of Krebs cycle. So when we take into consideration the oxidation of 2-acetyl coenzyme molecules, we have to double the number. So then we can say 2 ATPs are formed, 6 NADH molecules are formed, and consequently 2 FADH2 molecules are formed. So Krebs cycle again is a low energy yielding process. I hope that you have understood it well. Thank you very much.